path difference is equal to n lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3, that is order of the interference. And the phase difference is equal to 2m into pi, phase difference. So phase difference is, this is your, suppose this is the wave having this amplitude and another wave of this amplitude, then at that point we are getting the destructive interference. Okay, so the condition for destructive interference is delta is equal to 2n plus 1 lambda by 2. In case of in case of destructive interference, the wavelength is lambda by 2. Wavelength क्या होती है? Lambda by 2 होते हैं. In case of constructive interference, the wavelength is lambda. So when the phase difference is equal to pi, when there is phase difference of pi, then at that point we are getting the wavelength lambda. When and the for destructive interference we are getting the wavelength lambda by 2. Okay. So these are the conditions for the constructive and destructive interference. Another important point is the light should be coherent, that is clear. So whatever light we are for which the interference is happening, the light should be coherent. Similarly, the light is monochromatic or single wavelength and frequency. So light is to be monochromatic, then and then we are getting the interference of the light. Similarly, having equal amplitude. So the light wave should have equal amplitude, then and then interference happens, otherwise not. Then we had seen this equation. What is path difference? Path difference क्या होता है? The difference in distance traveled by the two waves from their respective sources to a given point on the screen. So this is wave S1 that is coming. This is S2 wave that is coming from this slit. At that point, the path difference is equal to 0. It means they are in phase. So wavelength is lambda here. Wavelength क्या है? Lambda है. When one wave is superimposed with another, then at that point we are getting the constructive interference on the screen. This is your screen. At this point you are getting the bright color of the light, or intensity of light is very high. When the path difference is lambda by 2. Okay, here path difference is lambda, or you can say path difference is 0. The wavelength is lambda, and here path difference is lambda by 2. Then we are getting the destructive interference, means both the waves are out of phase. Crest of the one wave is superimposed with the pro of the another wave. At that point we are getting the black color line or black band. What is wavelength? Wavelength is the distance between successive crest of the wave. This is the crest of the one wave. This is the crest of this wave that is ended here. यहाँ पे वो wave end हो जाती है. Then from this we are getting the another wave. So the distance between the crest of the one wave to the crest of the another peak, so that is nothing but the wavelength. Similarly, the distance between the throw of the maximum point of the throw to the maximum point of the this point, that is the wavelength. The path difference is lambda by 2. There is complete destructive interference happens. When the path difference changes to lambda, there is complete constructive interference happens. Okay. The intensity changes between the lambda and lambda by 2 and lambda. So which are the point? If they both are not in either constructive or destructive, उसके बीच में अगर होगा तो क्या होता है? इंटेंसिटी कम मिलती है हमें. If both the waves are not constructive or destructive, at that point what we are getting? अगर constructive भी नहीं हो रहा है और destructive भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे at this point we are getting the less intensity of light. So it is not either black or not either red. So at that point we are getting the in the middle, not constructive and destructive. Then at that point we are getting the less intensity of light.
What is phase difference? Phase difference is the time difference between the same positions within the wave cycle of two waves. So this is the one wave, this is another wave, and the phase difference is distance between phase cycle of the two waves. Suppose this is the maximum point of this wave, this is a maximum amplitude, and this is another point of the another wave. So this is called as the phase difference. The time difference between the same position within the wave cycle of two waves is called as the phase difference. Snell's law. What is Snell's law? The ratio of sine of angle of incidence to the angle of reflection R is constant, is called refractive index. The refractive index is what? Refractive index mu is equal to sine of I upon sine of R. So this is the equation of the Snell's law. Since it is dimensionless quantity, so mu1 is equal to mu2. Mu1 is the refractive index of when light is incident from the rarer medium. Mu2 is the refractive index when light is get transmitted to the denser medium here. So its refractive index is mu2. Since both are equal, so mu is equal to sine of I upon sine of R. So this is the Snell's law. The refractive index is measure of reduction in the velocity of light. So whenever light is coming or going from one medium to another, that is rarer medium to denser medium, there is change in or reduction in the velocity of light takes place. यहाँ पे velocity of light क्या होती है, कम हो जाती है. So it is depends on the material, from which material light is going on. The properties of that material उसके ऊपर depend रहती है. So refractive index is measure of reduction in velocity of light in medium that effects result from the interaction of light with the material. The refractive index is also known as refraction index or index of refraction of material. This is we had seen. So last time हमने देखा था derivation of this, derivation of the interference of light. So light is incident on the thin film. This is the thin film. This is upper portion of the thin film. This is lower portion of the thin films. So when light is incident at point B, what happens? There is partially reflection. Partially reflection. Light is get reflected here. That is R1, and partially transmitted here. And at that point, at the point C, again there is reflection and refraction happens. When light reaches at point D, then during the time what is happen? R1 reaches up to point N. If you draw the perpendicular on this BR1, if you draw the perpendicular, then we are getting the point N, capital N. N क्या है यहाँ पे? Perpendicular अगर आपने draw किया तो point N मिलता है. That is when light is ray R1 comes at this point N, during that time ray R2 goes into the goes from B to C and C to D, and ray comes at point D. So this is nothing but the path difference. So this is the path difference between the ray R1 and R2. Again at the point D, what is happening? Some part of light is partially reflected here. So reflected light is come from D to E. Again there is reflection and refraction happens at point D. So it is continuous. So we are getting two light rays, and when these two light rays are superimposed with each other in the space, then what happens? There is either constructive or destructive interference happens. So it depends on the phase difference. किसके ऊपर वो depend है? Phase difference के ऊपर है. The phase difference is both are equal amplitude. Both if the R1 and R2 both having equal amplitude and frequency, then we are getting the constructive interference. If they are out of phase, means like this. If they are out of phase, then like this, then there is destructive interference happens. Means both the waves are cancelling each other. So for which this happening, interference of light is depends on the thickness.
थिकनेस कितनी है उसके ऊपर डिपेंड रहता है. Similarly, angle of incident, angle of refraction, on this also this constructive or destructive interference is depends. Now we will take this. It is same figure like this, only here I had taken the capital G and here instead of M I had taken the small capital K. In this figure we have this capital G and this is K. So interference of thin film with uniform thickness. Both the thin films are uniform thickness. There is no change. So thickness is same for at this point and every point of this thin film. So the interference is due to the BF and DG. So whatever interference that we are getting because of the reflected light that is coming from B and D point, that is BF and DG. So BF and DG, when they are interfere, then we are getting interference of light. So this distance traveled by DH in air. Distance traveled by DH means this ray 2. How much distance it is traveling in the, how much distance it get travel, that is BC, that is refractive index multiplied by BC plus CD. So this is the distance traveled by DH in air is equal to mu into BC plus CD. The path difference between two rays. So this is R1 and R2. This is your R1 and R2. Any question? सर ये Hello? डिस्टेंस तो फिल्म के अंदर ट्रेवल किया था ना? हाँ. तो आप एयर बोल रहे हो? नहीं, यहाँ से यहाँ तक फिल्म में आया. CD तो थिन फिल्म के अंदर है ना? हाँ, ये अंदर थिन फिल्म के अंदर है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है और यहाँ से फिर वो एयर में जा रहा है ना. तो यहाँ तो से एयर में DH होगा ना? तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय DH इन एयर इज इक्वल टू दिस वन. यहाँ पे ये दोनों का एडिशन होगा ना. यहाँ से रिफ्लेक्टेड होके यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है. यहाँ पे फ्रॉम दिस पॉइंट व्हाट आई हैड ड्रॉन दिस परपेंडिकुलर ऑन दी BF. सो आई गॉट द पॉइंट G. पॉइंट G क्या है? So the time taken by ray R1 is the time taken by the DF is BC plus CD. तो जब तक वो यहाँ से यहाँ तक आता है पॉइंट D तक, तब तक रे कहाँ पे जाता है? R1 रे कम्स एट द पॉइंट G. तो वेव R1 की वेव्स कहाँ पे आती है? पॉइंट G तक आती है. तब तक जो है दिस वेव्स इज गोज डाउन एंड कम्स एट द पॉइंट G. So both are at this point are equal. So that is nothing but the path difference between two rays. दोनों रेज में क्या है पाथ डिफरेंस? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इंटू BC plus CD minus BG. The path difference between two rays is delta is equal to mu into BC plus CD minus BG. That is this one. So what we are getting two triangles, BKC and CKD. Both the triangles are congruent, means equal. So this is your one triangle, that is this one. This is your another triangle. Both are equal or congruent. So BC and CD both are equal. दोनों का both the lines are equal. BC plus CD are equal. So I am writing it like this. BC is equal to CD is equal to CK upon cos of R. What is CK? CK is the thickness. CK जो है for both the triangles CK is common. It is nothing but the thickness small t. So it comes out to be, this is equation number 2, T upon cos of R. In case of triangle BDG, means this triangle, upper triangle BDG, triangle BDG, this is upper triangle. Sin of I is BG upon BD. Sin of I means angle of incidence. That is
Sin of I is equal to BG plus BG upon BD. This one. Sin of I, this one. Sin of I is equal to BG upon this one. BG upon BD. But what is BD here? I should rub this. Okay. Since both the lines are equal, BK is equal to KD. Since both the lines are equal, so I am writing it like this. BD is equal to BK plus BD. So it is nothing but the 2 times BK. Okay. So tan of R is equal to BK upon CK. What is tan of R? Tan of R means this angle. What is tan of R? This triangle. Tan of R is equal to BK upon this one. Tan of R is equal to BK upon CK. Since CK is equal to thickness, so I am writing it like this. BK is equal to T into tan of R. Put this, BD is 2 times of this one. BK क्या है? 2 times of BD is equal to 2 times of BK. So I am put this value of BK here in this equation. Then I am getting the BD is equal to 2 times T into tan of R. So from equation number 3, this equation. From equation number 3, put the value of BG here. BG is equal to BD into sin of I. Put the value of this here, BD. Put the value of BD here. Then I am getting this equation. Okay. By this Snell's law. What is Snell's law? Refractive index is equal to sin of I upon sin of R. So I am just taking this sin of R here in this in the left hand side. Then I am getting this equation. Put that sin of I here. Okay. Put that value. Put the sin of I value is this one in this equation. Then what I am getting 2t into sin of R upon cos of R. यहाँ पे आपको cos of R है sin of R upon cos of R into mu into sin of R. Okay. So BG is equal to 2 times mu into sin square. This is sin of R, this is sin of R. तो क्या हो जाएगा sin square of R upon cos of R. That is equation number 4. Put the value of equation number 2 and 4 in equation number 1. Then what I am getting, part difference is equal to 2 times mu upon cos of R into this one. So I am taking common terms out of the bracket. But what is 1 minus sin square of R is equal to cos square of R. So finally I am getting the part difference delta is equal to 2 times mu into cos of. This is the final equation of the thin part difference in case of thin films. Part difference of the 2 rays in case of thin films. This is the final equation. Now for the constructive interference, at which point we are getting the constructive interference? Yes. सर ये Yes. प्लस माइनस लैम्डा बाय 2 क्यों लिखा है? That is whatever when in case of constructive interference, the part difference is pi. Both are in phase. Means both are in out of phase. Then we are getting the lambda. But in case of destructive, it is lambda by 2. Destructive में क्या होता है? Lambda by 2 होता है. Change in wavelength होती है. Wavelength change हो जाती है. When light is going from one medium to another, wavelength is changing there. So that's why we are taking plus and minus. For constructive interference, delta is equal to n lambda. Put the value of this delta here. Then we are getting this equation. So this is the equation number 6. That is the condition for the getting the constructive interference. Where n is equal to 0, 1, 2. If it is positive,
If it is negative, then we are getting the n is equal to 1, 2, 3. For destructive interference जब होता है तो पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू 2n प्लस माइनस लैम्डा बाय 2. यहाँ पे क्या है, लैम्डा बाय 2 होती है इफ इट इज डिस्ट्रक्टिव. वेवलेंथ इज 50%, means 0.5 of the incident wavelength. Then we are getting this equation 2 mu t cos of r plus minus lambda. Put the value of path difference here. Whatever equation we get, this equation, put this path difference in this equation. Then we are getting the 2 mu t cos of r is equal to n lambda. So this is the condition for getting the maxima. So maxima and minima depends on the thickness. What is the thickness of the thin films and the angle of refraction and incidence on which this maxima and minima is depends. समझ में आ गया यहाँ तक? Any question? यस सर. सर Okay. ये प्लस माइनस में लैम्डा बाय 2 इधर है और इधर मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे कैंसल आउट होगा? If this lambda by 2 goes here, then both are cancelling each other. Okay, and this 2n, if this comes here, then 2 cancel हो जाएगा और n आपको फाइनल आंसर मिलता है n लैम्डा. ये जो है this one, this will cancel out with this one. But if you multiply this with this, then you will get the n lambda. Abhi? Yes. In the above diagram, which is produce the maxima and minima. Yes, in this one. So maxima and minima. Maxima is able. This is maxima and this is minima. Minima means maxima कब होगा? When there is constructive interference होगा. Minima कब होता है? When there is destructive interference होता है. So BR1 is maxima and DR2 is produce minima. No, it is not like that. When both the waves are meeting with each other, at that point what is happening? Either constructive or destructive. Either constructive interference happens or destructive interference happens. When both the waves are coming from the thin films, when both the waves are coming from the thin films, on the screen you will get the either brightness or darkness. So by brightness किस पे depend रहेगा and maxima किस पे depend रहेगा? How they both the waves are superimposing with each other? Both the waves कैसे superimpose हो रहा है उसके ऊपर वो depend रहता है. So when both are having equal frequency, when both the waves are superimposed with having equal amplitude and frequency, then and that you will get the bright light. Or constructive interference or destructive interference happens when they are out of phase. Means if both are out of phase, then at that point you will get the darkness or dark line. Now any question? So there in the exam you will ask to derive this equation or to solve the problem on this equation. आपको एग्जाम में एक तो डेरिवेशन पूछा जाएगा या फिर प्रॉब्लम्स आपको पूछे जाएंगे. Now we will take the examples. Okay. So write down first example. Write down first problem. It was asked on May 2004. Mass is around 4 mass. Everybody has notebook.
सबने नोटबुक में ये सब लिखना है एंड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. हेलो हेलो, हाँ सबके पास Yes, sir. नोटबुक है अभी. Yes, sir. Yes. So everybody should have notebook and calculator with you. Calculator सबके पास है. No, sir. आपको साइन कॉस का वैल्यू निकालना पड़ेगा. Okay, sir. तो कैलकुलेटर ले लो पहले and solve this problem. Now problem first is a parallel beam of sodium light strikes a film of oil floating on water. When viewed at an angle of 30 degree from the normal, eighth dark band is seen. Determine the thickness of the film. The refractive index of oil is 1.46 and wavelength of sodium is light is this one. तो आपको क्या पूछा है? Thickness small t. Find the value of small t. 2 times mu t cos of r. 2 times mu t cos of r is equal to n lambda. Okay. तो यहाँ पे आपको क्या सॉल्व करना है? डिटरमाइन थिकनेस स्मॉल टी की वैल्यू आपको पूछी है. व्हाट इज द एन वैल्यू? 8th डार्क बैंड बोला है. इट मींस 1 2 3 4 5 8 डार्क बैंड आपको दिया है. एन वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 4. वैल्यू ऑफ wavelength of this sodium light is this one. You convert it into centimeter. सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.46. A beam of sodium light strikes a film of oil of floating on the water. Determine thickness of the film. Find out from this equation. Sir, हाँ, sir, can you explain one time again? T इज इक्वल टू क्या? T आपको फाइंड आउट करना है ना. T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस इज द इक्वेशन ऑफ वी हैव. इन दिस इक्वेशन साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू. तो म्यू की साइन ऑफ आई आपको दिया है. आई की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री. लेकिन आर की वैल्यू आपको दी नहीं है, तो वो आपको ढूंढनी पड़ेगी. बट यू हैड गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज इक्वल टू दिस वन. ओके. पुट द वैल्यू ऑफ साइन 30 ईयर. साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो. ये साइन इधर जाएगा तो उसका साइन इनवर्स लेके आपको ये वैल्यू मिलता है. देन थिकनेस टी इज इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ आर. n lambda upon 2 mu into cos of r is equal to this one. So what is the final answer? You need to find it out. कितना आता है? सॉल्व करो. सॉल्व कर रहे हैं अभी. क्या हुआ? सॉल्व कर क्या रहे हैं. हुआ? फाइनल वैल्यू इज. और किसी का आया है कुछ? 1 पॉइंट. Sir, please change your slide. ये इस फॉर्मूला तो आपको मालूम है ना. यू नो दिस फॉर्मूला. थिकनेस आपको फाइंड आउट करना है. डार्क बैंड पूछा है. डार्क बैंड यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है. इन केस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वैल्यू ऑफ दिस वन
path difference is equal to 2 mu t cos of r is equal to n lambda. क्या है फाइनल आंसर क्या है? क्या आंसर क्या आया ये सॉल्व करके? 3.23 10 कितना? 3.23 into 10 raised to minus 4 sir. 2 3 into 10 raised to power minus 4 4. और किसी का क्या आंसर आता है? और किसी का आता है ये आंसर? सेंटीमीटर, यूनिट इज सेंटीमीटर. ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर आएगा. थिकनेस इन सेंटीमीटर. So the final answer is this one, 1.718 into 10 raised to power minus 4. हमारा आंसर गलत हो गया क्या पे देखो. This is wrong answer. Wait, sir. चेक करो ये बराबर है. तो the next problem. Next problem है a soap film of refractive index is 4/3 and thickness is given to you. Is illuminated by white light of incident of angle IQ value आपको दी है. The light reflected by it is examined by the spectroscope in which is found a dark band. Dark band यानी destructive interference हो रहा है corresponding to the wavelength दिया है आपको. Calculate order of interference band. यानी स्मॉल n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ओके, स्मॉल n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इस एग्जांपल में. कैसे सॉल्व करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है यानी 4/3 म्यू इज इक्वल टू कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 4/3. ओके, थिकनेस दिया है आपको 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, दैट इज थिकनेस. इल्यूमिनेटेड बाय व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट का वेवलेंथ दिया है, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू दिस वन, इट इज इन सेंटीमीटर. देन एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है स्मॉल आई. कॉस ऑफ आर आपको फाइंड आउट यानी आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर फर्स्ट. देन सर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन का 1.718 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 सेंटीमीटर. अब इसका फाइंड आउट करो क्या आता है बताओ. पहले तो आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी. टेक दिस इज योर इक्वेशन. सिंस इज डार्क बैंड द इक्वेशन इज 2 mu t cos of r. आर की वैल्यू आपको दी नहीं है बट आई की दी है. देन यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर हियर. देन यू विल गेट दिस वन. टी दिया है आपको, लैम्बडा दिया है, म्यू भी दिया है, सिर्फ आपको एन नहीं दिया है. एन आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एन हियर. तो कैसे? तो इक्वेशन क्या आएगा ये? एन इज इक्वल टू 2 mu t cos of r divided by Sin r equals to 0.37. क्या आता है आंसर? फाइनल आंसर बोलो. एन की वैल्यू कितनी आती है? दिस एन की वैल्यू. कॉस ऑफ आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ से. साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू 4/3. सो आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? फिर वो आपको इसका उसका कॉस लेना पड़ेगा. टेक द कॉस ऑफ दैट वैल्यू. So n is equal to this is your final equation.
Okay. So the final answer is, this is n. N is equal to 6.478, यानी n की वैल्यू 7 है. This is your final answer. सबका हो गया? Any problem? Value of n is equal to 7. Wait, sir. Yes, sir. So in the order of interference is a positive integer, the value of n is obtained is closer to 7. And 6.78 यानी वो 7 के close है, compare with the 6. So that's why we have taken n is equal to 7. So such a problems asked in the exam. Okay. Next problem. Write down this problem. An oil drop of volume. Oil drop का volume आपको पूछा है, दिया है. Sorry. What is the value of oil drop is? Take this is your pond. Take this pond on this oil drop is there. Volume of the oil drop is कितना है? 0.2 cc. 0.2 cc. Dark tank of water of area 1 square meter. 1 square meter. That is the area of the water tank. Okay. The film spread uniformly over a surface and white light which is incident normally is observed. So light incident normally incident हो रहा है is observed through a spectrometer. The spectrum is seen to contain first dark band whose center has wavelength 5.5 into 10 raised to minus 5 centimeter in air. Find the refractive index of the oil. म्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू हियर. So you had given the volume of oil is equal to 0.2 centimeter cube. Okay. ऑयल ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? 0.2 centimeter cube. When it is drop on the surface of the tank of water having area, so volume upon area is equal to thickness of the film. Thickness of the film is equal to volume upon area. Volume of the oil drop upon the area of the tank. So आपको thickness मिल जाएगी यहाँ से by this equation. आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. सो म्यू इज इक्वल टू हाउ व्हाट इज n लैम्बडा डिवाइडेड बाय 2 into cos of r. So this is your final equation. Now solve this problem. Okay. Thickness Sir, आपको दिया है. scroll down the second example. Because of network issue, I can solve or screenshot it. हेलो, वेवलेंथ लैम्बडा दिया है आपको. Hello, sir. Yes, what happened? Sir, second example scroll down करा ना, network issue मुळे दिसला नाही ते. एक आहे. Screenshot काढून घे. तर याची PDF पण देणार. नाही, आता तुम्ही सॉल्व करता तर PDF ची काय गरज आहे आता?
तुम्ही नोटबुक वर लिहिताय ना? सर प्रॅक्टिस साठी असू द्या. हो, प्रॅक्टिस आताच करू राहिलो ना, नंतर तुम्हाला वेळ भेटणार आहे का? सर सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है सर, इसलिए भेज देना एक बार। ओके ठीक है, नहीं क्वेश्चन लिखना हमेशा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा क्या सॉल्व कर रहे हैं। सर टाइम every ही कहाँ time you should बचेगा write- अभी लिखेंगे तो। ओके नेक्स्ट टाइम देखो, नेक्स्ट टाइम लिखा करो, अदरवाइज यू विल कंफ्यूज व्हाट इज क्वेश्चन, ओनली जस्ट आंसर। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में आप आंसर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखा नहीं तो नीचे का आप क्या करोगे? ऐसा है, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट रादर देन आंसर। ये सॉल्व करके बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, जल्दी सॉल्व करो। साइन आई की वैल्यू जो है डेट इज दिस वन, आर की वैल्यू आपको 0 दिया है बिकॉज इट इज नॉर्मली इंसिडेंट। थिन फिल्म में लाइट कैसे नॉर्मली इंसिडेंट होता है। ओके, film is uniform over surface of white light, incident normally, light is white light is incident normally, यानी ये सीधा normally incident हो रहा है, that's why value of R is equal to 0 here. Okay, so there is no any angle, so refractive index is angle of refraction is 0 since it is normally incident, value of R is equal to 0. So cos of 0 means 1. 1. So put that value here in this equation, and what is the final answer? Tell me final answer. Sir, here what is the value for n? What is the value of for n? N. N is equal to 1. नहीं, n is equal to white light is normally observed through the first dark band यानी यहाँ पे फर्स्ट डार्क बोला है, यानी n की वैल्यू 1 है इस यहाँ पे फर्स्ट डार्क बैंड बोला है, इफ यानी वैल्यू डार्क बैंड इज इक्वल टू 2। So mu equals to 2.75 into 10 raised to 5. Divided by cos of 2 into cos of R। फाइनल आंसर क्या Cos आता है? तो 1 है ना, तो म्यूजिक 2.75 सर टी into 10 राहिलाय, raised to minus. 2 cos tr. टी ची व्हॅल्यू इथे ही आहे ना, इथे टी पाहिजे, इथे टी पाहिजे, हे इकडे येणार ना। म्यू इज इक्वल टू 2t cos of R, n upon lambda upon 2t cos R of 0 R. है ना. What is final answer? 1.375. 1.375, that is the refractive index। और किसी का आता है ये आंसर? यस सर, मेरा आता है। Okay, so final answer is 1.375 is the final answer. Okay, सर आलम सेम. okay, बराबर है। Now the next problem, What is the unit? unit there is no unit for this, since mu1 upon mu2 both are cancelling each other, mu1 upon mu2 दोनों cancel करेंगे। Next problem,
ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, पहले प्रॉब्लम लिखो पहले। A thin film of oil of refractive index, यानी म्यू की वैल्यू आपको दिया है, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है, म्यू इज स्प्रेड ओवर अ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू 1 और म्यू 2 की वैल्यू दिया है, म्यू 1 और म्यू 1.3। द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज दिस वन एंड स्मॉल t की वैल्यू आपको दी है t। ओके, calculate the wavelength from visible region that will be absent यानी dark from the reflected light with view such that the angle of refraction in the film is 60 degree। angle of refraction दिया आपको 60 degree, इससे आपको cos of r आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो पूछा क्या है आपको, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल रीजन, लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3। Since it is destructive interference, destructive interference क्यों है, because it will be absent from the reflected light, absent बोला है इसलिए destructive interference है। So equation for destructive interference is this one, 2 mu t cos of r is equal to 2n minus 1 into lambda by 2। लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, तीन वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द इक्वेशन इज लैम्डा इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 म्यू टी कॉस ऑफ आर अपॉन 2n माइनस 1। ओके, बाकी आपको ये दिया है, म्यू दिया है, टी दिया है, आर की वैल्यू 60 है, n की वैल्यू 1 2 3 झालं 12 12.5 झालं। व्हाट इज द फाइनल आंसर? So this is your last example. Now next example we will take in the next lecture. ये फाइनल आंसर बता दो। अटेंडेंस Sir, mu can यस, क्या हो गया? Sir, please wait. यहाँ पे क्या डालते, एक्सएलएस फाइनल आंसर बताओ। Sir, वो slide दिखा। सर तो इसमें n 1 2 3 से लेके क्या लेंगे? हाँ, तीनों सिलेक्ट करना है, दिस इज वन लाइक दिस। तो पहला का जो है n इज इक्वल टू 1 लेगा तो आपका फाइनल आंसर आता है 4800 एंगस्ट्रॉम। दिस इज इन मीटर, मीटर का आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके sir 10⁻10 कसं काय झालं हे? करके देखो ना, नाही पावर होत. -7 है यहाँ पे कितना n इज इक्वल 1 लिया तो कितना 4 - 1 into 3। ओके, कॉस ऑफ 60 कितना आता है? हाफ 1/2। हाफ है हाफ है ये हाफ. कैलकुलेट करके देखो, यही आता है ये हाँ 1. नहीं 2 - 1 1 2 कैंसल बचा 4.8 देखो 4. हाँ 4.8 राइट सर, into राइट 10 आ गया raised सर, to आ गया सर, मीटर में 4.8 into 10 raised to -7 4800 Armstrong.
अभी n इज इक्वल 2 लेके देखो और n इज इक्वल 3 लेके देखो। तो दिस इज योर फाइनल। 1.6 into 10 raised to minus 7. हॅलो सर. यस सर प्लीज फक्त पीपीटीच पाठवून द्या सर, म्हणजे रिव्हिजन करायला सोपं पडेल. मेन तर तुमचे प्रॉब्लेम्स आणि जे मी डेरिव्हेशन जे तुम्हाला पाठवलंय ना ते मेन आहे. पीपीटी समजण्यासाठी, पण ते जे एक्झामला काही विचारत नाही त्याचं, पण तरी सर मी काय पाठवून पाठवलंय देतो. तुम्ही? मी आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस आय हॅड सेंडेड टू यू. नाही सर पाठवलं नाही. नाही सर नाही भेटलं. ये आपका इसमें अपलोड करता हूँ मैं पे. सर म्हणजे कसं वेळोवेळी तसं अभ्यास करता येईल म्हणून. ओके. पीपीटी मी लेक्चर्स कंप्लीट झाल्यावर पाठवतो. चॅप्टर कंप्लीट झाल्यावर जे हे जे दिले ना डेरिव्हेशन ते तुम्हाला पाठवतो. हो सर चालेल. थँक्यू. बाकी काही मुलांना पाठवलं मी. ते तुझा सर नाही व्हॉट्सअप ग्रुपवर नंबर किंवा सर डायरेक्ट WhatsApp ग्रुपवर नंबर सेंड किंवा कर. टीम्स वरच टाकून द्या सर. सगळ्यांनाच भेटेल ना. हे डी डिव्हिजन आहे ना टीम्स मध्ये टाकून द्या. टीम्स मध्ये. टीम्सला अपलोड डी करून डी द्या सर. डी डी आणि एफ. टीमचाच अपलोड करून द्या सर. डी आहे सॉरी. ई डिव्हिजनला पाठवलंय, तुमचंच बाकी राहिलं वाटतं. हां फिजिक्स सर आम्हाला बाकीचं सेंड करायचं. अपलोड. सर हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हम लीव कर सकते हैं? हाँ, आपका अटेंडेंस हो गया, आप जा सकते हैं. ये मैं कर देता हूँ. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर.